All right then. So we had a question there. We had one pulley that was sort of fixed with the wall, and from this pulley we had one block hanging like this, and there was one more pulley over here, and with these pulley we had two blocks, A and B. So that was the question, and here we have B. Let's say if this block A, B, and C, if let's say C is going up with an acceleration of maybe you can say 2 meter per second, or let's suppose velocity of 2 meter per second. This is going up with the velocity of, let's say, 1. Okay, this is going with the velocity, let's suppose 4 meter per second, 4 meter per second. Then what should be the velocity of B? What should be the velocity of B? Come on, try this out. What should be the velocity of B? What should be the velocity of B? Come on, solve it out. What should be the velocity of B? All of you, within a minute, करके दिखाओ. 8 meter per second down. 8 meter per second down. Okay, very good. So it's 2 up, so this is going to be 2 down. Velocity of pulley is equals to velocity of A plus velocity of B upon 2. Then velocity of B is 0, right? Velocity of B is 0, right? Rahul? It's -2, right? Very good. This pulley is going down, so it's going to be -2. So this is going to be -4 minus 4 is going to be, velocity of B should be minus of 8 meter per second. Means it is going downward with a velocity of 8 meter per second. I believe by this time everyone should be okay with this. Anaji? All good? Yes, तो ये 2 मेथड हो गया. एक और मेथड करवाता हूं. राइट? So I have taught you the virtual work method yesterday. Today I'm going to teach you the dot method. Dot method. बहुत ही easy और convenient method है. This also is a very much effective method. Dot method. Dot method. Dot method. Let us say that I have a pulley over here. थोड़ा छोटा कर लेते हैं. There is one pulley, and this is connected with 2 blocks is connected with this over this pulley. Let's suppose this is your block A and block B. Block A and block B. Block A and block B. Now, let's suppose this is going up with a velocity, certain velocity. Let's suppose that is the velocity of the pulley. That is the velocity of the pulley with which it is going upward. If I tell you that this is the velocity with A, it is going upward. Let's suppose this is B and this is your A. This is going up with the velocity of VA, and this is going also up with the velocity of VB. Find the relation between VA and VB. Find the relation between VA and VB. So 2 methods already we have learned. 2 methods already we have learned. 2 methods already we have learned. Now this is the third method. That is the velocity of the, like dot method. Dot method. देखो. So basically write down, लिखो, note. Write down. Write down. Let me use this color. Look at the points. Look for the points. Look for the points where string is getting or string is touching anything, be it pulley or be it block, touching anything.
So we have 4 such points. Let's say point number 1 is here, point number 2, point number 3, point number 4. Point number 4. So these are the 4 points where the block is touching. I mean, like the string is touching anything. Now, point number 2 that you have to should look, figure out if that point's movement, if that point movement is increasing or decreasing, the string's length. You have to figure out whether that point's movement is increasing or decreasing the strings का length वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है. That's what we have to look for. That is what we have to look for. If it is increasing, put positive. If it is increasing the length, that means positive. And if it is decreasing the length, that should be negative. That should be negative. That should be negative. That should be negative. Now, let's have a look at this thing. If I look at point A, I have assumed that the block A is going upward. So this point is certainly decreasing the length of the string, है ना? A इसको छोटा कर रहा है. Agree करते हो आप लोग मेरे से? Yes, sir. So minus VA. Point number 2, since pulley is going upward, it is increasing the length. So plus VP. This point also is increasing the length, plus VP. This point B is decreasing the length, minus VB is equals to 0. So 2 times of VP is equals to VA plus VB. देखो result same आ गया ना. Velocity of pulley should be velocity of A plus velocity of B upon 2 बच्चों. So this is the dot method, and this is also very, very nice method. I'm going to do a couple of questions based on this method. फटाफट note it down. This is called dot method or point method, जो भी आपको बोलना है बोल सकते. And it is same valid for the acceleration also, ना? Acceleration में भी same ही चीज करेंगे, but वहां पे VA की जगह AA रहेगा, AP रहेगा. That's it. चलिए quickly note it down. Okay, noted all of you? Rahul, Harika, everyone noted? Yes, sir. Okay, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा. ध्यान से सीखो, बहुत मजा आने वाला है. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा और प्रैक्टिस करने में भी मजा आता है. दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन, आपको अच्छा लगेगा. लेट्स सपोज इफ आई हैव अ ब्लॉक हियर and this is A, and let's suppose if I have a block here. अयो बड़ा गंदा हो गया जी.
कोई नहीं, एक पुली यहाँ पे है, एक ऐसा पुली है, थोड़ा आड़ा तिरछा बन रहा है, ये भैया ऐसे हो गया ना। आज मेरा काम था शूडो फोर्स तक खत्म करने का। देखते हैं देखते हैं, here we have, this is block B, this is your block C. Let's say this is going up with a velocity of 2 meter per second, this is going down with a velocity of 6 meter per second. You have to find the velocity of C. Find the velocity of C. Firstly, all of you note down the question. Now, as I've told you, find out the points where the string is touching anything. One point is here, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, point number 6, point number 7, खुद तेरी बहुत सारे पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 8, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, बट अपने को डरने का है नहीं, यू नो। आप लोग मेरे साथ जल्दी से बताते जाओ, ठीक है? मैं पूछूंगा, आप लोग बोलोगे। एवरीवन गो अनम्यूट, जल्दी से सब अनम्यूट हो जाओ, जल्दी से सब अनम्यूट हो जाओ जी। ठीक है, चलो ओके, बताओ ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 1 इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, गोइंग अप ना, इस लेंथ को छोटा कर रहा है, राइट? ओके ओके, या डिक्रीजिंग, -2। पॉइंट नंबर 2 एवरीवन, it's doing nothing because this pulley is not moving, so 0. Point number 3 0। चलो बताओ पॉइंट नंबर 4 एवरीवन। इंक्रीजिंग, सो It is increasing है ना, because this is इंक्रीजिंग, या going down। कितना से जा रहा है जी? 6। 6, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कम ऑन। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ना, पुली इज गोइंग डाउन, राइट? तो इस स्ट्रिंग को इंक्रीज कर रहा है ना, नीचे खींच रहा है, इट्स पुलिंग इट डाउन, राइट? इट्स इंक्रीजिंग बच्चों, इंक्रीजिंग, +6। चलो पॉइंट नंबर 6 0, 0, बहुत अच्छे। पॉइंट नंबर 7 7, डिक्रीजिंग, ना ना ना, सेम पुली पे, राइट? एंड दिस पुली इज नॉट मूविंग, 0। ओके, या 0, पॉइंट नंबर 8 तो मेरे को पता नहीं है ना, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो एक काम करो, इसको वेलोसिटी को किधर भी मान लो, ऊपर नीचे किधर भी मान लो, मैं इसको नीचे मान लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज गोइंग डाउन, दैट मींस +vc। वो गलत होगा, मैंने उल्टा सोचा होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, अगर सही मैंने माना तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। एंड एवरीथिंग शुड बी 0, राइट? बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग, स्ट्रिंग का लेंथ तो सेम ही है ना। तो कितना हो गया? 12 -2 10। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकंड। इसलिए मैंने जो सोचा वो गलत था, सही है, एक्चुअली वो सही था, नेगेटिव है तो सही है वो। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ सी इज 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। कितना अच्छा मेथड है ना जी, ऑल गुड? यस सर, हाँ, Yes. इधर ही तो गलत हो गया ना। नेगेटिव मीन्स व्हाट आई हैव सेलेक्टेड इज रॉन्ग। इट मीन्स वो नीचे नहीं जा रहा है, इट इज एक्चुअली गोइंग अपवर्ड। क्योंकि मैंने क्या लिखा था? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ आई चोजन इट डाउनवर्ड, दैट इज व्हाई इट वाज इंक्रीजिंग द लेंथ। बट वो नेगेटिव आ गया आंसर, इसका मतलब कि मैंने जो चूज करा था उसका ऑपोजिट में करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब नीचे नहीं, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है। ये बातें क्लियर है जी? राहुल, स्वामी, एवरीवन एल्स? Yes, sir. गुड। हरिका, बच्चे क्लियर है ना? यस सर, ठीक है जी, चलिए अब फटाफट रफ्तार में एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा आज। बहुत जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। सब सीखते रहो मेरे साथ, करते रहो, समझते रहो, पूरा अटेंशन में रहो, पे द फुल अटेंशन इन द क्लास। एंड मैं सबका नोटबुक चेक करूंगा एक दिन, दोज हु आर अंडर माय रीच, खास करके 2 बच्चे जो मेरे काफी नजदीक हैं, आई एम गोना चेक द नोटबुक। इसी संडे को मैं चेक करने वाला हूँ। तो ये देखो जी, बिकॉज मुझे पता चला है कि पढ़ाई कम हो रहा है, मस्ती ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक ब्लॉक इससे कनेक्टेड है जी,
और एक पुली मैंने इधर मान लिया, एक पुली मैं मान लेता हूं, पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ ये सही लग रहा है। एक पुली यहां पे, there is one more pulley which is connected to this block and it is connected to, and this string is connected to, ऐसे मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, बिशोम 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 बिशोम, फिक्स्ड कर दिया इसको, मैंने इसको फिक्स कर दिया। दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, इसको ए मान लो, बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। द ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट at 10 meter per second. You have to find the velocity of the block B. Find the velocity of the block B. आपके पास 1 मिनट का समय है, रफ्तार में करो इसको, जल्दी से करो। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी करके दिखाओ, डू इट। Okay, anyone got the answer? Anyone got the answer? देखो जी, पॉइंट नंबर 1 इज फिगर आउट द पॉइंट्स, है ना। तो चलो इसको पॉइंट 1 मान लो, इस पॉइंट को 2 मान लो, थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और ये बच्चों हो गया 6th पॉइंट। राइट वर्ड आई एम टेकिंग पॉजिटिव, सो लेफ्ट वर्ड हैज टू बी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है जी बच्चों, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, +10 या -10, जल्दी। पॉइंट 6, कम ऑन। सर माइनस। राइट जा रहा है ना। अच्छा देखो हरिका, कैसे हम लोग पता करते हैं एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं। व्हेन यू आर मूविंग द पॉइंट 6 ना, बाकी सबको कांस्टेंट रखो। ये इधर रुका हुआ है, ए से रुका हुआ है, एंड दिस इज द पॉइंट 6। अब पॉइंट 6 को इधर पुल करोगे तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा ना बच्चों, इट विल इंक्रीज, राइट हरिका? Sir, but then isn't it moving to the left side? No, 10 meter per second, right side na, 6 is block is moving right side. Okay, the block is moving right side. Okay, yeah. ब्लॉक मूव करेगा तो Got it. पॉइंट भी तो मूव करेगा ना ब्लॉक के साथ, पॉइंट अलग नहीं होना है। Yes, sir. राइट में इंक्रीज करेगा जी वो, है ना, दैट वुड इंक्रीज। चलो तो +10 हो गया ना, इसको ऐसे लिख दो, +10 को +10 ऐसे लिख दो। पॉइंट नंबर 5, अब देखो व्हेन यू आर लुकिंग एट पॉइंट नंबर 5 एंड आपने माना है कि ब्लॉक बी का वेलोसिटी इज राइटवर्ड है, तो एवरीथिंग एल्स वुड बी स्टैटिक। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे है बच्चों, और इसको मैं राइट में मूव करो, स्ट्रिंग छोटा हो जाएगा ना। देखो पॉइंट 5 यहाँ आ गया, स्ट्रिंग छोटा हो जाएगा, और इधर आएगा छोटा हो जाएगा ना। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डिक्रीजिंग, अग्री एवरीवन? Yes, sir. तो दैट शुड बी -5। अच्छा -5 में क्या लिख रहा हूँ, -VB होगा ना, 0.5 था वो, -VB। पॉइंट नंबर 4 इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, -VB। पॉइंट नंबर 3 इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 10 से कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो पुलिंग द स्ट्रिंग, बड़ा कर रहा है उसको, +10, +10 है ना। तो सही है ना, 10 10, ये बीट हो गया 10, और दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। इट मींस इट इज नॉट चेंजिंग, ये कुछ नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट चेंजिंग, अग्री ऑल ऑफ यू? दैट शुड बी 0, that should be 0, and overall that should be 0. So minus of 2 times of VB is equals to 30, which means VB should be -15, -15 meter per second. VB should be, oh sorry, my bad, +15 meter per second.
It means what I have chosen was very much correct क्योंकि positive आया है. It means the block should move rightward with a velocity of 15 meter per second. With a velocity of 15 meter per second. है ना जी? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड. लॉजिकल भी है. दिस इज टेल मी द राइट वर्ड. यहाँ से 5 इधर से आएगा क्योंकि 5 तो इधर से ही मिल रहा है मेरे को ना, बिकॉज दिस इज कमिंग 15 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी जाएगा. चलो एक और करते हैं. लेट्स डू वन मोर. लेट अस डू वन मोर. लेट अस डू वन मोर. let's say let's say let's say we have one block here, one pulley here, and it is, you're following all this stuff, and Sanchit? Yes, sir. Good. So here we have, देखो बहुत अच्छा से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को. आप कुछ टीचर के छोड़कर आपको इससे अच्छा नहीं मिलेगा. It's not arrogance, it's all about the confidence. एक ये रहा, थोड़ा सा गंदा सा पुली बन गया है, कोई नहीं. आई एम कवरिंग एवरीथिंग. इस चैप्टर्स में सारे कुछ कवर कर रहा हूँ. इनफैक्ट मैंने सारे चैप्टर्स में सारे कुछ कवर किए हैं, तो इसको मैं कवर अप अच्छे से कर रहा हूँ. एंड हियर वी हैव, एंड हियर वी हैव, एक ऐसे एक ऐसे. तो इतना प्रैक्टिस क्लास में बहुत कम जगह आपको करने को मिलेगा. सो आई इफ आई एम गिविंग माय 200%, आपसे भी वही उम्मीद की जाती. द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल आल्सो, कि आप लोग भी घर पे खुद से, ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से पढ़ाई करो, होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप लोग उसको पूरा कम करते हो. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. लेट अस से दैट this block is coming down with a velocity of 4 meter per second. अब मैं चाहता हूं कि आप b का velocity बताओ. Tell me the velocity of b, and let's say I'm giving you, it's going vb upward, है ना. Tell me the velocity of b. Tell me the velocity of b. जल्दी से करो, आपको 30 seconds का टाइम है. ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कर लिया होगा. कैन समवन गिव मी द आंसर? कैन समवन गिव मी द आंसर? कैन समवन गिव मी द आंसर? यार तुम लोग मतलब डिसअपॉइंट कर रहे हो मेरे को. You guys are disappointing me. बताओ बताओ, anyone? Sanchit, tell me the answer, boy. देखो, सेंस ऑफ कंपटीशन लो अपने अंदर, यू नो, सेंस ऑफ कंपटीशन. खुद से पहले तो कंपटीशन करो, और दूसरा अपने आसपास अच्छे बच्चों से कंपटीशन करो. यहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है, कोई नहीं दे रहा आंसर. बताओ जी, कितना आसान है. देखो मैं करूँ इसको, ये 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा बच्चों. इट इज गोइंग डाउन. पॉइंट नंबर 1 गोइंग डाउन. ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है. दिस ऑल्सो रेस्ट, दिस ऑल्सो रेस्ट. तो मैं इसको ऐसे ही इग्नोर कर दूंगा जी. आई एम गोना जस्ट इग्नोर दीज बिकॉज दीज पॉइंट्स आर ब्लडी रेस्ट. दे आर नॉट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन. This point is going up, this point is going up, so decreasing.
this point is going up, this point is going up, so decreasing, and all these 4 points are going up with the velocity of vb because they're connected to the block b. तो एक तो नीचे की ओर है which is increasing the length of a, so +4, and these 4 points 1 2 3 4 decreasing the length -4 times of vb, -4 times of vb, that should be 0. यार कितना हो गया जी, 1 मीटर पर सेकेंड, कितना आसान था, 1 मीटर पर सेकेंड कितना आसान था, है ना जी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. है ना, बहुत अच्छे, बहुत आसान है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग डायग्राम है, बट इस मेथड से पुइंग पाम बुम बड़ाम बुम खत्म, ऐसे बन जाता है। और अच्छा इसी क्वेश्चन को चलो तो करो तो वर्चुअल वर्क मेथड से करो तो वर्चुअल मेथड क्या होगा, इस ब्लॉक में कितना टेंशन, सब में टेंशन टी ही रहेगा ना, टेंशन टी सेम स्ट्रिंग, टेंशन टी बूम 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 टेंशन टी, कितना काम होगा। तो बेसिकली फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होगा, है ना जी। इसका एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, उसको वेलोसिटी से कर देंगे, क्या ही दिक्कत है मेरे को, कुछ खास दिक्कत तो है नहीं। तो दिस इज अप टी, सो वी हैव आई हैव टॉट यू द मेथड, टी डॉट ए शुड बी 0 बिकॉज स्ट्रिंग स्ट्रेच होता नहीं है, स्ट्रिंग कभी होता नहीं है, तो वर्क डन शुड बी 0। ए ऊपर की ओर है और द बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, तो नेगेटिव 4 टाइम्स ऑफ टी, वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन मान के भी चलें, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे देखो टी टी, यहाँ पे टेंशन कितना हो गया 2t, टी टी यहाँ पे कितना टेंशन हो गया 4t, सॉरी ओहो 2t 2t 2t, तो टोटल टेंशन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज हाउ मच 4t, एंड द ब्लॉक इज गोइंग अपवर्ड, तो vb रख लो, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो प्लस इक्वल्स टू 0, 4 4 कैंसिल, टी टी कैंसिल, vb कितना हो गया जी, खत्म, लाइक राहुल गांधी सेज खत्म, क्या ही बचा इसमें। दिस इज द वर्चुअल वर्क डन मेथड, वर्चुअल वर्क डन मेथड, वर्चुअल वर्क डन मेथड आसान है ना, हरिका स्वामी, राहुल, संचित, हितेश, इजी है ना जी। तो देखो Yes, sir. इस चैप्टर में Yes, sir. आई हैव Yes, sir. taught you very very nice stuff, आप प्रैक्टिस करोगे देन टेक माय वर्ड, आपको सब कुछ ही बनेगा, अच्छे से बनेगा जी, बहुत अच्छे से, बहुत मजे में बनेगा। चलो एक इंक्लाइंड क्वेश्चन करवाता हूँ, एक इंक्लाइंड पे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इसमें आपको इरडोव लेवल के क्वेश्चन बनवा दूंगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस थोड़ा करोगे तो मैं उस लेवल के क्वेश्चन भी करवाने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। तुम लोग खुद से मेहनत करते नहीं हो बदमाशों, मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा इस चलो जी एक पुली लगा दिया, ठीक है, एक पुली लगा दो। पता है लास्ट ईयर मेरा बैच में 12th में देयर वाज अ गर्ल, हर नेम इज अस्मी, उसने 96 परसेंटेज लाया 12th में, और जेई में उसका अच्छा परसेंटाइल आ गया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा आ गया था, और 2-3 बच्चे और थे बोर्ड में, तो सबने अच्छा किया है, और ये रहा ऐसे, और एक बच्ची थी उसका नाम भूल रहे हैं, उसका आया था 92 परसेंटाइल जेई में आया था मेंस में। अब तुम लोग से उम्मीद है, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, मेहनत करोगे, यू गाइस कैन आल्सो रॉक। अच्छा मैंने ऐसे बना दिया ना, नहीं इसको इधर कर दो ना ऐसे, लेट्स पुट इट हियर, एंड द स्ट्रिंग माय डियर, लेट्स स्ट्रिंग को मैं डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ, ऐसे और ऐसे, दिस स्ट्रिंग लाइक दिस, एंड दिस इज अ ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक, ऐसे ऐसे ना, इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, वुड लाइक टू चेंज इट अ लिटिल बिट, क्योंकि ये गलत रॉन्ग देगा आइडिया, ऐसे वेज मान लो ना, वेज ऐसे, तो दिस इज द वेज, दिस इज द वेज, एंड दिस इज द थ्रेड, ये आपका स्ट्रिंग है जी, अब ठीक लग रहा है, वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना ऐसे, एंड दिस इज योर पुली। लेट अस सपोज, इसमें थोड़ा सा वेक्टर का रूल लगाते हैं, लेट अस सपोज दिस block is moving this way with a velocity of 10 meter per second. Find
velocity of B with respect to wedge. With respect to wedge. Find the velocity of B with respect to wedge. इसको साथ में करते हैं, let us do it together, है ना?